Hello everyone. Welcome to my channel MCube, a platform for class 9 to 12th mathematics. Hello students, welcome to MCube classes again. Today we are going to cover a very important topic of class 12th and class 11th applied mathematics, that is total probability theorem and Bayes theorem. बच्चों देखो इसमें क्या होता है कि इन दोनों ही थ्योरम्स में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, तो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दीज थ्योरम्स विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल ओनली. वी विल अंडरस्टैंड बोथ द थ्योरम विद दिस एग्जाम्पल ओनली. ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. बहुत ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम. राइट नाउ सी, आई एम taking this example. This is box 1 B1 and this is box 2 B2. In box 1 we have 4 red balls and 3 blue balls. Okay, in box 2 we have 2 red balls and 4 blue balls. Fine. Now see, suppose in the question they are saying कि you have to find the probability that the drawn ball is red. ठीक है. Now see, if there is only one box, केवल एक ही box है, तो it's very easy. You can easily calculate the probability. You know the probability. How will you calculate it? Because total number of balls in box 1 is 7 and red balls 4. The probability would be 4 by 7. Right? But यहाँ पे केस क्या है? They have given 2 boxes. Okay? तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि 4 by 7 इस पूरे कंप्लीट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होगी फॉर ड्रॉइंग अ रेड बॉल. फाइन. तो हाउ विल यू डू दिस? फॉर दिस नाउ सी, वी कैन सेलेक्ट 2 पार्ट्स. either we can choose box B1 or we can choose box B2. We have 2 cases here. Okay, now see, first of all, what will be the probability for choosing box 1? What will be the probability? It is 1 by 2. Okay, it means I can say that probability of choosing box 1 will be 1 by 2. In the same manner, probability of choosing box 2 will be 1 by 2. Fine. Now the next thing. Now suppose I am telling you that you have only box 1. ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि you have already given that box 1 is there only. I told you कि आपको box 1 से ही red ball निकालनी है. Okay, so in that case, if I am telling you that, so what will be the probability of drawing a red ball? Okay, in this case, you can write down probability for red ball when box 1 is given, because box 1 जो है अब एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह वर्क करेगा. फाइन. तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड when we have chosen box 1, it would be, because 4 balls are here, total 7, that would be 4 by 7. Clear? In the same manner, if I am telling you that you have only box 2, it means मैं आपको बोल रही हूँ आप बॉक्स 2 ही है आपके पास, इट मीन्स आपने बॉक्स 2 चूज कर लिया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल व्हेन बॉक्स 2 इज चोजन, total balls 6, red balls 2, it means 1 by 3. The question is clear till here. Okay, now what is total probability theorem? Right? Now see, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि find the probability that the ball drawn is red. आपको probability ये निकालनी है. मतलब you have to calculate probability of drawing red ball. ठीक है, तो it means ये तो R by B1 है when the condition is given. And how will you calculate this one? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों कंडीशन को एडिशन थ्योरम लगा देंगे. ठीक है, पहली वाली हमारी कंडीशन क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन बॉक्स 1 इज चूजन R. ठीक है, and when probability when box 2 is chosen
this one. Okay, now it's clear to you. How will you write this one? You know the formula from multiplication theorem of conditional probability. ठीक है, your formula is probability of what is B1 multiplied by probability of probability of drawing red ball when box B1 is chosen, and probability of when box 2 is chosen. Clear? It means total probability for drawing red ball would be this. ठीक है, now easily you can calculate P1, PB1 1 by 2, R by B1 is 4 by 7 plus again 1 by 2, R by B2 is 1 by 3. Okay, it means it would be 2 2s are 4, 2 by 7 plus 1 by 6. It means you will take the LCM. ठीक है, now 42 it would be, I'm so sorry. ठीक है, 42 it would be 12 plus it would be 7, 19 by 42 would be the probability for drawing red ball. Clear? Now this is the total probability theorem bacha, this one. Okay, this is the total probability theorem. Clear? Now from this question only we will try to understand what is Bayes theorem. ठीक है, now see what is Bayes theorem. Bayes theorem is basically the reverse of this reverse of probability. This question only. Okay, now see, suppose I am saying the whole question is same. Box B1 given है, box B2 given है, ball same है, probability आपको पता है box B1, B2, R by B1, R by B2, आपको सब कुछ पता है. But अब क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? They are saying कि अगर वो ये बोलते हैं कि from a selected ball the red ball is drawn, they have already given that the drawn ball is red. Find the probability that the ball is chosen from box B1. You are getting my point? इसमें आपको आउटपुट दे दिया, आउटपुट ये दे दिया कि इसमें से रेड बॉल हमने चूज कर ली है. ठीक है, बट ये क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हमने बॉल चूज करी है वो बॉक्स B1 से है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आप समझ रहे हो, रिवर्स हो गया, राइट? तो इसमें इस केस में हम क्या करते हैं, देखो ऑल कंडीशंस आर सेम. बॉक्स B1 चूज करने की, आपकी बॉक्स B2 चूज करने का, आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ choosing red ball when box B1 is chosen and when box B2 is chosen. Okay, now see next thing. It means आपको ये पता है, अब आपको ये निकालना है कि जो हमने रेड बॉल चूज करी है वो बॉक्स B1 से ही सिलेक्टेड है. इसका मतलब इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करो. दे आर सेइंग रेड बॉल इज ड्रॉन, ऑलरेडी ड्रॉन, and you have to find the probability that this red ball is drawn from box B1. So can I say or can I write in probability terms that probability of finding box B1 when it is given that red ball is chosen? Clear? This is conditional probability. Conditional probability means they have given the condition that the red ball is chosen, and then what is the probability that it is chosen from box B1? Okay, how can you write down this? Easily. We know the conditional probability is B1 intersection R, ठीक है, divided by, we know what it would be, PR. You know the formula of conditional probability. Clear? Now see. Now here can I write down this PR
हमें PR कैसे मिलेगा? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से. हम ऐसे ही तो 2 बॉक्सेस में से निकाल नहीं लेंगे रेड बॉल. तो उसके लिए यू कैन राइट डाउन P B1 intersection R divided by what was the statement for PR जो हमने लिखा था टोटल प्रोबेबिलिटी में. Yes, that would be box B1. ठीक है, multiplied by PR by B1 plus PB2 multiplied by PR by B2. I hope the total probability theorem and the Bayes theorem is clear now. In both the cases, events are mutually exclusive and exhaustive also, right? So this is all about the total probability and Bayes theorem. Now you can easily solve the answers. Okay, now I have one question from R.D. Sharma. See, very important question in CBSE 2008, 2015, it was there. ठीक है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन. नाउ सी टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम. बेस थ्योरम के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? देखो, इन अ बोल्ट फैक्ट्री machines A, B and C manufacture respectively 25%, 35% and 40% of the total bolts. Of their output, 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product. देखो, इन्होंने बता दिया कि एक बोल्ट जो है वो एट रैंडम चूज कर लिया है. इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी? देख रहे हो आप, उल्टा पूछा. उन्होंने बोल दिया कि हमने जो बोल्ट ड्रॉ किया वो क्या है, वो डिफेक्टिव है. ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये मशीन बी से बना है? आप समझ रहे हो, जब भी क्वेश्चंस में आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब उल्टा जाना पड़े, दैट इज द क्वेश्चन फॉर द बेस थ्योरम ओनली. ठीक है, और उसमें आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी काम आती है. आई होप दिस वीडियो would be beneficial for all of you. Okay, and in my next video I'll try to explain some more concept of probability in easier manner. Thank you so much. Please like it, share and subscribe.